Good morning, friends. Today we will begin with our second unit of the manufacturing process part 2 subject. The second unit is all about the different three major types of machineries that are generally observed in the industries these days. The first one is regarding the drilling machine. You know, the drilling machine that we usually see in our household, also the hand drilling machine, whenever that electrician or some certain sorts of operations that are performed that are necessary at the level of the domestic use. Okay, so we have a typical idea right from our school days that we know what a drilling machine actually is all about. Second one is the milling machine, and third one is the broaching machine. So before going into the details of the milling and the broaching machine, today in our lecture we will see about some brief introduction, or we can say some brief idea regarding the drilling machine. Okay, so we will start rightly. So the drilling. Okay, so what does that drilling means? Drilling means is nothing but the material removal, right? Okay, so drilling is an operation of a metal cutting process only. In the last lecture, we have seen what actually the material aspects, or how the materials are chosen, or what are the factors that are actually affecting the materials. Okay, while doing the machining. Okay, machining of the materials. So in the today's lecture, we will start with the same thing. That is, we will continue with the next part, that is regarding the actual operations that are conducted by the different machineries. So drilling is nothing but a metal cutting process only, which is carried out by a rotating tool, right? जो drill bit रहता है, drill bit, the ones which are shown on your current screen, the image of the drill bits, we have seen these drills. Okay, so that cutting tool is used to make the circular holes in the solid materials. So tools which it generally makes hole is called as a drill bit or the twist drill. Okay, so this is simple definition and a simple operation that has been explained. What actually the drilling process is? The drilling process is nothing but the removal of the material, right? Removal of the material, or we can say the metal cutting process to make the circular holes. ठीक है, और इसमें जो टूल है, okay, that the tool that which is used for the drilling operation is called as a drill bit, or in other technical word it is called as twist drill. Okay, so in the next slide we will see that what actually a drilling machine is all about. A power operated machine, basically it is a power operated machine. It requires the power to run. Okay, it is a power operated machine tool which holds the drill in its spindle, rotating at very high speeds, and when actuated move linearly against the workpiece, and it produces a hole. So what they have explained, it is a power consuming device. Okay, it needs a power to get operated, right? And it has a spindle with the part which holds its drilling tool, and that rotates at a very high speed, or we can say moderate speed, according to the need of the operations. Okay, and when actuated, when moved, okay, so it moves linearly against the workpiece and produces a hole. एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाएगा तो जो भी ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन के अंदर एक स्पिंडल एज अ पार्ट रहता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उसके इमेज के बारे में देखेंगे, व्हाट एक्चुअली द स्पिंडल इज ऑल अबाउट. And it rotates at a very moderate or high RPM at the required, as per the required conditions, or as per the required necessity for producing a hole, or a drill hole, to make a hole in the particular job, the material or the metal piece which is used to perform the operation. So एक hole produce करने के लिए
ये जो स्पिंडल है वो रोटेट होता है, जिसमें और वो लीनियरली भी मूव कर सकता है अगेंस्ट द वर्क पीस, एंड इट सिंपली प्रोड्यूसेस अ होल। ठीक है, तो ड्रिलिंग मशीन इज नथिंग बट अ मशीन विच इज ऑपरेटेड on power. So in the next slide, we can see what are the types of the drilling machine. Portable drilling machine, of course guys, there's this portable drilling machine we have observed in our household activities, or we have seen this kind of machineries in our day-to-day life in the domestic purpose. Then there are the next versions which are used in the industries. The one is the bench drilling machine, then next one is the radial drilling machine, pillar drilling machine is there, gang drilling machine is there, multiple drilling machine is there. So there are different for about means portable. First, second is the bench, third one is the radial, fourth one is the pillar, fifth one is the gang drilling, and sixth one is the multiple drilling machine. So there are actually the 6 different types of the drilling machines used for the different purposes. पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का जहाँ एप्लीकेशन है, तो छोटे छोटे एप्लीकेशन के लिए हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन ही यूज़ करेंगे, राइट। एंड व्हेन वेयर देयर आर द रिगरस ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट, बहुत हेवी मेटल है या फिर जो मेटल का टफनेस ज़्यादा है, ओके, मटेरियल का टफनेस ज़्यादा है, जॉब ज़्यादा हार्ड होगा, तो उस जगह पे हमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस नेसेसरी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ड्रिलिंग मशीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। Portable drilling machine, the figure as you are seeing in the on the screen, right? So this is a portable drilling machine. I have used that actual image, okay. Next thing is that the first of its very kind that is used in the actual industrial purpose, that is a bench drilling machine. These are the light duty machines used in small workshops. There are small workshops which do not have a very heavy metal workout. जो छोटे छोटे workshops पे जिसमें ज़्यादा इस heavy drilling का या फिर heavy जॉब मटेरियल्स जहाँ पे यूज़ नहीं करते, सिंपल ऑपरेशन से यस बट मेटल्स पे ही कैरी आउट करते हैं, तो उस जगह पे, ऐसी जगहों पे या फिर इन सच काइंड ऑफ वर्कशॉप्स बेंच ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. बेंच ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज्ड. Okay, so it is also called as a sensitive drilling machines because of its accurate and the well balanced spindle. Okay, इसे बहुत okay, इसको although इसका कंस्ट्रक्शन ईजी है, although इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ईजी है, लेकिन what we have to keep in mind is that it is also called as a sensitive drilling machine. Sensitive drilling machine इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो स्पिंडल है, जो स्पिंडल दैट इज़ अ रोटेटिंग पार्ट, इन द लास्ट स्लाइड वी हैव सीन, स्पिंडल है इसका जो बहुत ही एक्यूरेट और वेल बैलेंस्ड है. ओके, इसको थोड़ा भी डेविएट, थोड़ा सा भी हमें हल्का सा भी उसे टच करते हैं या फिर धक्का देते हैं या फिर थोड़ा सा डेविएशन मिल जाता है, तो वो क्या होता है, डेविएट होता है अपने टारगेट से. ओके, सो इट हैज़ टू बी परफॉर्म विथ अ वेरी वेरी एक्यूरेसी. इसे बहुत सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इसीलिए कहा जाता है कि एक्यूरेसी इसमें बहुत मायने रखती है. तो किस प्रकार के होल, ओके, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एप्लीकेशंस, अगर हमें 15, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15 तक के होल्स अगर हमें ड्रिल करने हैं, छोटे छोटे जॉब्स है जो कि एक्चुअल उस बेड पे फिट हो सकते हैं, तो ऐसे जगह पे या फिर ऐसे जॉब्स पे हम बेंच ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं. सो बेंच ड्रिलिंग मशीन की दो खासियत क्या है कि ये एक ड्रिलिंग मशीन है जिसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है, जिसका स्पिंडल बहुत ही एक्यूरेसी से काम करना पड़ता है. थोड़ा भी उसे धक्का दे या फिर थोड़ा भी उसे डिस्टर्ब करे तो वो डेविएट हो सकता है, अपनी पाथ से चेंज हो सकता है और गलत जगह पे हम होल क्रिएट कर सकते हैं या फिर होल क्रिएट हो सकता है. और किस टाइप्स के होल्स के लिए, कितने डायमीटर के होल्स के लिए, बेसिकली डायमीटर्स पर ही हम बात करेंगे. हमें 14 डायमीटर का होल चाहिए, हमें 13 डायमीटर का होल चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे हमें 13 के होल्स चाहिए, तो अप टू 15 होल्स. ओके, 15 डायमीटर होल्स. डायमीटर, you know diameter, that is the size of the hole which is measured in the diameter. So up to 15 diameter holes, this kind of machines, that is a bench drilling machine, are basically used. Okay, so bench drilling machine का zoom in करके हम फिगर देखेंगे. See, this is a very simple bench drilling machine. बहुत से वर्कशॉप्स में, बहुत से स्मॉल वर्कशॉप्स में यूज़ होता है.
In our college workshop also you can see this kind of machineries. Okay, this type of the drilling machine, bench drilling machine. uh, अगर देखा जाएगा तो जो स्पिंडल है, ओके, स्पिंडल जो है वो रोटेटिंग पार्ट है, ओके। फिर उसको पावर कहाँ से दिया जा रहा है, तो राइट साइड में टॉप मोस्ट इसमें देखेंगे तो उसको ड्राइव मोटर दिया जा रहा है। ये पावर ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा याद रखना है, ओके। और ये जो है ड्रिल फीड हैंडल, सो अकॉर्डिंग टू द हैंडल हम फीड उसे देते कि कितना डेप्थ चाहिए, कितना की उसमें होल्स चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हम फीड देते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू वो ड्रिल। जब ड्रिल फीड हैंडल हम रोटेट करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो ड्रिल पियर्स होते होते ड्रिल होल प्रोड्यूस करता है। एंड डाउनवर्ड्स दे हैव शोन दैट देयर इज़ अ वर्क टेबल, देन वर्क टेबल फॉर हेवी जॉब्स। अगर जो जॉब्स है वो इस वर्क टेबल पे फिट नहीं होते होंगे तो फॉर हेवी जॉब्स इसका फॉर हेवी जॉब्स के लिए एक अलग सा वर्क टेबल उसमें प्रोवाइड किया गया है, राइट। और ये वर्टिकल कॉलम है जिसके ऊपर स्लाइड हो सकता है, और ये दूसरा है बेस, ओके। आखिरी वाला जो है वो है बेस। सो दिस इज़ नथिंग बट द सिंपल बेंच ड्रिलिंग मशीन. What are its parts? So as discussed earlier in our earlier slide, the vertical main column is there, that I have told you that it can the means for vertical column is shown in the figure. The next thing is the base, and then moving drill head है, जो drill head है वो moving है, ओके। उसे अप या डाउन अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट हम उसे स्लाइड कर सकते हैं थ्रू दी वर्टिकल कॉलम। देन देर इज़ अ वर्क टेबल, ओके। वर्क टेबल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर डूइंग द ऑपरेशंस on the particular jobs. Then there is the electric motor, of course, as I stated that electric motor, it provides the power for the operations for the drilling machine. Then there is a variable speed gearbox and spindle feed mechanism. So according to the spindle, जो rotating drill feed handle है उसमें, और according to the different we can say different speeds, we can set up different speeds. So there is a variable speed gearbox for containing the same, okay. now Now we can see, as discussed, lots of discussion regarding the bench drilling machine. Now in short or in brief we can understand its working. That workpiece with the exact location marked on it with the center punch is clamped rigidly on the work table. So as I stated that whenever the equidistant holes are required, so markings are made prior to placing that job on that particular workbench, or we can say on the bed. And accordingly, with the help of the center punch, the tool, or we can say, okay, it can be said as a tool which is used for markings, okay। मार्किंग्स के लिए ये सेंटर पंच का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, और एक्यूरेट मार्किंग्स के लिए कि जहाँ जहाँ हमें डिफरेंट होल्स ड्रिल करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू द उसके मार्किंग्स के लिए हम सेंटर पंच से उस पर निशान लगाते हैं, राइट। सो सेंटर पंच इज़ नथिंग बट टू show the markings, okay। Next thing is spindle axis and the center punch indentation are in same line. As I said that it is a very sensitive type of drilling machine, तो जिसका स्पिंडल एक्सिस और जो सेंटर पंच है इंडेंटेशन एक के नीचे एक, यानी प्रॉपर इन द वन एक्सिस, एक एक्सिस में वो ड्रिल का जो स्पिंडल है और जो पंच किया हुआ या फिर जो मार्किंग है वो एक यूनि एक्सियल आना चाहिए, ओके। एक एक्सिस में वो एक 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 लाइन में, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, वो उस पर आना चाहिए, राइट। इंडेंटेशन यानी, सो मशीन इज स्टार्टेड एंड द ड्रिल बिट इज लोवर्ड बाय रोटेटिंग फीड हैंडल, okay। So drill bit touches the work and it starts removing material, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग, ओके। सो बेंच ड्रिलिंग मशीन बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ मशीन है, और ये इसका एक्चुअल फिगर है, ओके। ये एक्चुअल इमेजेस मैंने इसलिए डाला कि just by looking at the diagrams sometimes we do not get the ideas, but by actually looking at the images we can get what that machine or what that concept is all about. So as per the phrase, a picture says 1,000 words. So basically by observing sometimes the images we can make out that what sort of working or how the
actual mechanism might be working. Okay, so next thing is regarding the radial drilling machine. Now these are heavy duty and these are the versatile drilling machine. They're used to perform the drilling operations on the large and the heavy workpiece. And now every drilling machine, what their basic motto is that they will remove the material, they will produce the holes, but according to the applications and according to the diameter only, and according to the different types of according to the different types of applications, the different types of machineries or the different types of the drilling machines can be used. Now to produce the holes up to the 7.5 centimeter. Okay, so as I stated that, however, that whenever the different the level of the object or the work, or the, we can say, the job, as it reaches or as it goes upper and upper, that is as it is according to its size and according to its heaviness, the different machineries, drilling machines are used. Okay, so this radial drilling machines, they are generally used to produce the holes up to 7.5 centimeter. Now, what are the radial drilling machines looking all about? So here it is, we are seeing in the figure, it is having an the first thing is that the motor for moving arm, right guys? So इसको मोटर एक्चुअली पावर देता है, फिर ड्रिल का पोजीशन बताया हुआ है, ठीक है, फिर आर्म एलिवेटिंग स्क्रू है, सो अकॉर्डिंगली द आर्म एलिवेटिंग स्क्रू इज देयर, द कॉलम इज गिवन, वर्क टेबल इसका डायरेक्टली बॉटम पे दिया है, राइट? सो बेस के ऊपर ही उसका वर्क टेबल दिया है. व्हाई इट इज सो? इट इज जस्ट फॉर दी हेवी वर्क पीस है. ओके, जो हेवी जॉब्स है, हेवी मेटल वर्क्स है, उसमें जो अगर हमें प्रोड्यूस करना है होल्स या फिर ड्रिल्स, सो अकॉर्डिंगली हमें वर्क टेबल भी उतना मजबूत होना चाहिए, उतना स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द ब्रीफ पिक्चर अबाउट द radial drilling machine. What are its main parts? As discussed, the heavy base, the very distinctive thing that we have to observe in this drilling machine is that it has a heavy base, then the vertical column is there, horizontal arm is there, and the drilling head is there. Okay, now we will see what actually it is having the working all about. The working piece. The work piece is marked for the exact location and mounted on the work table. Okay, so here for producing either the few number of holes, but actual or the accurate or the exact location is marked on that workpiece, and then it is again mounted on the work table. Okay, so the heavy work pieces are there that we have to keep in mind. Then the drill bit is then located by moving the radial arm and the drill to the marked location. Okay, so drill bit is then located by moving the radial arm. So it has a radial arm which can swivel, which can move through and pro. Okay, which can move, which can swivel. Okay, it has half, we can say half rotary motion, we can say, not the complete rotary motion, but half. It can up to 180 degrees. We can swivel the arm, we can move that arm, and accordingly we can adjust the drill and have the drilling operations performed on the marked location. So by starting the drill spindle motor, the holes are drilled. Okay, so drill spindle motor, it has a different motor for the spindle also. So by starting that, we can give the power to the spindle and the operations are performed. Okay, so the drilling machine operation, what actually the drilling machine operations are all about? There is a reaming is there, the boring is there, counter boring is there, counter sinking is there, spot facing is there, and tapping is there. Now what these different words or what these different operations actually mean? फिलहाल तो हमने देखा है कि जब हम रिमूव करते हैं, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है, ड्रिलिंग के बारे में हमने इतना पढ़ा है अभी तक कि होल्स क्रिएट करने के लिए. बट हैव यू एवर इमेजिन कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्स भी रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के द्वारा उन्हें हम पहचान सकते हैं, राइट? सो रीमिंग एक ऑपरेशन है, बोरिंग एक ऑपरेशन है, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन है, काउंटर सिंकिंग है, स्पॉट फेसिंग है, टैपिंग है. So what these actually different drilling machine operations are all about? Let's see. So first operation is nothing but the reaming. Now,
what actually reaming is. So we will have a look on the definition first, that it is a process of smoothing the surface of the drill holes with a tool. ड्रिल्ड होल्स, ऑलरेडी ड्रिल्ड होल्स, अगर उसका सरफेस, उसका बेस हमें स्मूथ करना है तो फॉर स्मूथिंग दैट प्रोसेस, ओके, स्मूथनिंग के लिए of this that surface of the drilled holes with a tool, the tool which is specifically used for the reaming operation, and it is also called as a reamer, we can say. Since it is used for the reaming operation, it can be called as a reamer. So initially a hole is drilled slightly smaller in size, then the drill is replaced by the reamer, and speed is reduced to half that of the drilling. What is the first process? That a hole is drilled with a smaller size, slightly smaller in size, okay, and then the drill is replaced by the reamer, and then for that purpose the speed of the reamer is kept half that of the drilling. Okay, now we will see what actually the reamer looks like all about. So here in the diagram, or here in the figure, there are two images. The one is the operational figure that has been provided so as to understand how actually the shapes are provided, or how it is smoothing the surface. So there is a tool rotation in the right side of the screen. You can observe that is a tool rotation is there. The tool is nothing but a reamer, since it is used for reaming operation. And what is reaming? Reaming is nothing but the smoothing the surface of the drilled hole. जो already drilled hole है, उसके surface को हमें smooth करने के लिए reamer की ज़रूरत है, और reamer और उस operation को कहते हैं reaming. So this is nothing but the reaming operation as shown in the right side of the screen. The tool is rotating at a particular axis. Then the feed is given, feed, the direction for its movement. This is the work piece on which the operations is performed, and this is the reamer, which is a tool which is used for reaming process. So in the left side of the screen you can see how actually the reamer looks all about. Okay. So we will move on to the next operation, that is nothing but the boring. अभी boring कैसे कहते भाई? So it is a process which is carried out on a drilling machine to increase the size of an already drilled hole. अगर कभी कभी हमें जो भी drilled hole है उसका size increase करना होगा, okay, उसका diameter increase करना होगा, तो फॉर दैट पर्पज समटाइम्स ड्रिल बिट्स उतने कभी कभी उतने साइजेस के अवेलेबल नहीं रहते. So sometimes, okay, so for that purpose or for different applications, कि अगर enlarged hole चाहिए होगा, okay, या फिर according to the geometry of the tool, or according to the geometry of that part needed to be produced, if you need a boring hole, or the means a larger size hole apart from the drilled size board, okay, drilled size hole. So the process carried out for enlarging the size of an already drilled hole is called nothing but the boring operation. So what actually it works all about is that initially a hole is drilled to the nearest size, and using a bore tool the size of the hole is increased. Okay, अगर 5 mm तक हम हमारे पास ड्रिल बिट अवेलेबल है तो हम 5 mm तक उसको होल करेंगे. ओके, अगर 5.5 या फिर 6 तक हमें चाहिए होगा तो, और उसके बाद हम बोरिंग या फिर बोरिंग टूल यूज़ करके उसका साइज़ भी हम enlarge कर सकते हैं. Next thing is about the counter boring. This process, what does it involve? What is actually the counter boring all about? This process involves the increasing the size of a hole at only one end. Okay, so this is nothing but in the figure we can observe that this is a counter bore tool. Okay, okay, then there's the pilot, which is called as a seat, for the seat, providing a seat for the we can say bolts. Okay, so the counter bore hole is shown, okay, in the figure. So what actually this process is? This process involves increasing the size of the hole only at one end, and the cutting tool will have a small cylindrical portion called as a pilot. Okay, so this is a small cylindrical portion which is called as a pilot. So what actually, or how the cutting speed is, it is the 2/3 of the drilling speed for the same hole. Okay, the speed for used for counter boring is made to be 2/3 as that has been used for the drilling operation.
Okay, so it provides basically अगर हमें size of the hole at one end increase करना होगा, okay, only at one end, both the ends किया है क्या, नहीं, only upper part, as per in the right side of the screen you can see on the counter board hole कौन सा उन्होंने region दिखाया, only the one side, okay, not both the side, not at the bottom, only the upper side they have shown. So to increase the size of the hole only at one end, this kind of the counter boring operation is carried out, okay, and the tool is called as a counterboard टूल, ओके, काउंटर बोर्ड टूल इसे कहते हैं. और उसका जो सीट है या फिर उसका जो स्मॉल जो कटिंग पोर्शन है या फिर द कटिंग टूल, इट विल हैव अ स्मॉल सिलेंड्रिकल पोर्शन विच इज कॉल्ड एज अ पायलट. Then we will move on to the next operation, that is nothing but the countersinking. This is an operation of making the end of a hole into a conical shape. Okay, so most of times you might have observed these kind of screws or the bolts which has a conical shape at the top, okay, and which is needed to be fitted in the work at certain applications for the workpiece. So for carrying out or for making a hole into a conical shape, okay, so this type of operation is performed, and the tool which is used for that particular operation is nothing but the counter sinking tool, okay. और इसका कटिंग स्पीड कैसा रहता है, तो इट इज़ हाफ ऑफ द कटिंग स्पीड ऑफ द ड्रिलिंग होल फॉर द सेम ड्रिलिंग होल के हाफ रहता है. सो हियर इट इज़ द एक्चुअल इमेज. देखिए गाइज, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, और आई हैव zoomed it. This is nothing but the counter boring tool, and in this left side of the figure we can see अगर हमें conical hole या फिर conical shape में अगर हमें मटेरियल रिमूव करना है तो उसके लिए हम काउंटर बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो दिस इज सिंपल. शेप कौन सा चाहिए, कोनिकल. कैच करना है, कोनिकल शेप चाहिए, कोनिकल वे से उसका मटेरियल रिमूव होना चाहिए. ओके, सो इन दैट शेप फॉर दैट पर्पज व्हाट इट इज डन, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस कैरी आउट किया जाता है. Next thing is nothing but the spot facing. It is nothing but the finishing operation to produce a flat round surface usually around a drilled hole. ठीक है, ड्रिल्ड होल के इर्द गिर्द में अगर हमें फ्लैट राउंड सरफेस प्रोवाइड करना हो या फिर फ्लैट राउंड सरफेस क्रिएट करना हो, सो फॉर दैट पर्पज स्पॉट फेसिंग है फॉर प्रॉपर सिटिंग ऑफ द बोल्ट, हेड और नट. ठीक है, जो एक प्रॉपर सिटिंग के लिए या फिर प्रॉपर उसका बेस अच्छे से वहाँ पे फिट हो जाए. ठीक है, क्या फिट हो जाए, बोल्ट हेड यानी जो एक स्क्रू का हेड रहता है या फिर वो एक चीज़ उसको एक प्रॉपर सिटिंग मिले, उसको प्रॉपर ग्रिप मिले, या फिर दूसरा है नट्स जो रहते हैं. ओके, सो नट के प्रॉपर फिटिंग के लिए ये इस तरह का ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है स्पॉट फेसिंग, एंड इट इज़ डन यूजिंग अ स्पेशल स्पॉट फेसिंग टूल. स्पॉट फेसिंग टूल का एक्चुअल image you can see on the current screen how the spot facing tool is all about. Okay, and why it is done, it is for providing a proper seat or the proper base for the bolt head or the nut. See, इस इमेज में आपको एक प्रॉपरली समझ में आएगा. ठीक है, स्पॉट फेस होल की किसे कहा जाता है. अगर अब हमें ये जो लार्जर इमेज है अपर साइड ऑफ द स्क्रीन में ऑन द करंट स्क्रीन, अगर देखा जाए तो अगर उसमें हमें वो बोल्ट बिठाना है, राइट, वॉशर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वॉशर्स हम एक आम लैंग्वेज में कहते हैं. ओके, कॉमन लैंग्वेज से इट एट वॉशर्स. एंड सो वॉशर्स का बेस क्रिएट करने के लिए, राइट, उसका प्रॉपरली उसको वहाँ पे फिटिंग होना चाहिए. ठीक है, तो स्पॉट फेस हमने यूज़ किया किसके लिए, वो बोल्ट का हेड उसमें प्रॉपरली फिट होना चाहिए, प्रॉपरली उसको बेस मिलना चाहिए, प्रॉपरली उसका वहाँ पे फिटमेंट होना चाहिए. तो स्पॉट फेस करने के बाद और स्पॉट फेस करने से पहले फिगर्स या फिर फिगर्स में आपको डिफरेंस नज़र आएगा, या फिर हाउ इट इज़ नॉट एट ऑल एबल टू फिट ऑन दैट पर्टिकुलर बेस. इन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर दिस इज़ नॉट स्पॉट फेस्ड. ओके, अगर हमने वहाँ पे वॉशर डाला है, ओके, फॉर सम हाउ फिटिंग के लिए, ओके, वॉशर या फिर बेस उसमें क्रिएट कर रहे हैं,
तो अगर प्रॉपरली वो स्पॉट फेस नहीं है या फिर उसका जो ज़्यादा ही राउंडनेस है वो एरिया में, तो वो बोल्ट वहाँ पे प्रॉपरली फिट नहीं होगा। और उसके बाद जब हम स्पॉट फेस करते हैं, स्पॉट फेस नथिंग बट उसके लिए बेस क्रिएट करते हैं। नट्स नट होगा तो नट अच्छे से बैठा जाएगा, बोल्ट होगा तो बोल्ट अच्छे से, उसका हेड अच्छे से बैठ सकता है। सो दिस इज नथिंग बट द स्पॉट फेस। वाई एंड हाउ इट इज मेड, सी द राउंडनेस in both the figures. Okay, so when it is spot fest, the bolt can properly fit, and when it is not, due to the roundness or due to the slopy nature of that tool geometry, or not tool geometry, that material geometry, the bolt is not able to fix into that position. And nothing but the last operation is about the tapping. This is a process of cutting the internal threads with a thread tool called as a tap. Internal threads, guys, these are the irregularities. For instance, we can say threads जो screw पे हमने जो एक geometrical एक देखा है ग्रिप की तरह, ओके, ग्रिप्स रहता है, ग्रिप की तरह उस पर एक जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं, राइट। थ्रेड्स द इरेगुलरिटीज, ओके। फॉर व्हाट पर्पस इट इज गिवन, फॉर व्हाट पर्पस इट इज गिवन फॉर द ग्रिप पर्पस, ओके। सो व्हाट एक्चुअली द टैपिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कटिंग द इंटरनल थ्रेड्स विद अ थ्रेड टूल कॉल्ड एज अ टैप। सो टैप इज फ्लूटेड threaded tool used for cutting the internal thread. So cutting speed shall be very low. Tapping जब करते हैं आप, जब वर्कशॉप में आप परफॉर्म करोगे इस टाइप के ऑपरेशंस, तो एक हैंड टैप्स रहता है, और टैपिंग मशीन्स भी आजकल आई हुई है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ द हैंड टैप्स you can have the threading that has to be created internally, so as उसमें उस तरह का प्रॉपर स्क्रू फिटिंग प्रॉपरली हो, ओके। So these are nothing but the different operations and what for actual purpose the drilling machine is used, all about the different operations I have shown to you. Also we have seen reaming, smoothing के लिए, boring, enlarging के लिए, counter boring, counter sinking, spot facing, tapping nothing but the internal threads create करने के लिए, spot facing यानी जहाँ पे bolts का head हो या फिर नट्स का हेड हो वो प्रॉपरली उसमें फिट हो सके, ठीक है। सो डिफरेंट ऑपरेशंस, ड्रिलिंग ऑपरेशंस वी हैव सीन, एंड ऑल्सो वी हैव सीन व्हाट एक्चुअली द रेडियल ड्रिलिंग मशीन कैसे कहते हैं, जिसका आर्म स्विवल हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था बेंच ड्रिलिंग मशीन, उसको सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहा जा सकता है, सिंस स्लाइट डिस्टर्बेंस और स्लाइट मूवमेंट टू इट्स spindle can deviates its direction and can result into the wrong hole, okay। So this is all about we have seen the brief idea bench drilling machine कैसे होते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो कि हम देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, डोमेस्टिक पर्पस में, एंड वेरी बेसिक स्टेटमेंट्स के ड्रिल एक्चुअली क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशंस कैसे कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिलिंग मशीन। यू माइट हैव गॉट द ब्रीफ आइडिया ड्रिलिंग मशीन्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर्स ऑफ होल्स के हिसाब से ड्रिलिंग मशीन के एप्लीकेशंस, ड्रिलिंग मशीन्स का यूज़ चेंज होते रहता है, ठीक है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हम हेवी वर्क ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते, और हेवी वर्क ऑब्जेक्ट्स या फिर जिस पे ज़्यादा बड़े डायमीटर के होल्स प्रोड्यूस करने हो, वैसी तरह की मशीनें लाइट वर्क ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू इट्स पोर्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डायमीटर होल्स टू बी नीडेड, एंड ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेशन, जैसे रिमिंग है, टैपिंग है, so different, these are nothing but the drilling machines and its operations that we have seen in a brief manner in our today's lecture. I hope you have enjoyed the today's lecture, and in the next part we will definitely see in detail that what is there, what are the different things that we need to explore in the manufacturing process, what actually it is all about. So thank you so much for listening and attending this lecture, and study well. Thank you.